Okay, students, we are going to discuss today the layers of the heart, or we can say that the coverings of the heart means the things those are going to cover the heart. ठीक है, आज हमने वो लेयर्स डिस्कस करनी है, वो कवरिंग्स डिस्कस करनी है जो हार्ट को घेर के रखती हैं या जिन्होंने हार्ट को कवर किया होता है। ठीक है, और वी कैन से लेयर्स ऑफ द हार्ट कि वो कौन कौन सी तह हैं जिनके मिलने से दिल बना हुआ होता है हमारा, या हार्ट जो है वो बना हुआ होता है। ओके, कवरिंग्स ऑफ द हार्ट और लेयर्स ऑफ द हार्ट. Heart consists of these four layers. First one is, as I can write it as, first is endocardium. I will explain the all these four layers. Endocardium, first one. The second is myocardium, and the third one is epicardium. Third one is epicardium, and fourth one is pericardium. Right? Okay. As you people can see in this diagram, this the first, this one, this layer that I am going to uh, make it bigger is the endocardium, right? This first layer is endocardium. After the endocardium, there is myocardium. We are moving from inside of the heart to the outside of the heart. ठीक है, हम अंदर से बाहर की तरफ के सबसे पहले अंदर वाली लेयर कौन सी है? The first most inner layer is the endocardium, then is myocardium, right? Then is this one. This one is endocardium. This one is myocardium. Then this layer is epicardium. Okay, and after the epicardium is pericardial cavity. Then there is parietal layer of pericardium, then fibrous pericardium. I will explain when I will be discussing the pericardium. ठीक है, ये pericardium की ना आगे फिर layers होती हैं, अभी मैं उनको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो मेन आप लोगों ने ज़हन में रखनी चार layers हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम के दरमियान फ्लूइड होता है। ये देखो पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, ये क्या है? पेरिकार्डियल कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, जो कि हार्ट जब पंप कर होता है तो उसको फ्रिक्शन से बचाता है ये फ्लूइड। ठीक है, इसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड भी कहते हैं, और जिस कैविटी के अंदर वो होता है उसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन these different layers of the heart one by one. First is endocardium. Endocardium is innermost layer. Innermost layer, as you people have seen in this diagram, the innermost layer. Okay, and this innermost layer consists of or composed of connective tissues, composed of connective tissues, right? Then and made up of simple simple squamous squamous epithelial cells, epithelial cells, right? This is all about the endocardium, which is the innermost layer of the heart. Next is myocardium. Next is the myocardium. The myocardium is composed of involuntary 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 striated cardiac muscle. As you people already know, हमने कल पढ़ा था जब हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, इसमें मैंने आपको बताया कार्डियक मसल। तो ये बेसिकली एंड जो मायोकार्डियम है, बेसिकली मायोकार्डियम इज कंपोज ऑफ दोज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डिक मायोसाइट्स। ठीक है, तो इसके अंदर वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि इन केस ऑफ स्केलेटल मसल एंड कार्डिक मसल्स these proteins are highly specified in their sequence, and this specified sequence is going to make these two type of cells, skeletal muscle and
कार्डिक मायोसाइट्स गोइंग टू मेक स्ट्राइएटेड मींस स्ट्रिप्स, ठीक है, उनके अंदर नजर आती है। तो बेसिकली ये जो मायोकार्डियम है इसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही होती हैं, ठीक है, और ये हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स सिस्टोल और डायस्टोल दे रहे होते हैं इसी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज एपिकार्डियम। इट इज द आउटर लेयर, is the outer layer of heart formed by formed by visceral layer, formed by visceral layer, visceral layer of pericardium, of पेरिकार्डियम। ये मैं भी आप लोगों को बताता हूँ कि पेरिकार्डियम की लेयर्स कौन कौन सी हैं, और ये बेसिकली जो विशरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एपिकार्डियम, राइट, पेरिकार्डियम। एंड दिस एपिकार्डियम इज आल्सो मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एंड squamous epithelial cells, squamous epithelial cells, right? Next is pericardium. Next is the pericardium. It is it is protective. It is protective. Fluid filled is protective. Fluid filled. Outermost covering of heart. ये outermost है. Outermost covering of heart. अच्छा, अभी जरा मैं इसको ना, ये पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम को मैं मजीद आगे इसकी लेयर्स होती हैं जो कि अभी आप लोगों ने ऊपर देखी भी हैं। पेरिकार्डियम, सॉरी वन मिनट, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, ठीक है। फर्स्ट वाले उसको हम कहते हैं, द फर्स्ट वन इज नोन एज फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम, राइट, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम। देन इज सीरस पेरिकार्डियम, देन इज सीरस पेरिकार्डियम, SEROUS, सीरस पेरिकार्डियम, राइट। अब ये जो सीरस पेरिकार्डियम है ना, दिस सीरस पेरिकार्डियम इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स। पैराइटल लेयर, कौन सी, पैराइटल, PARIETAL, parietal layer, and second one is visceral layer. Second one is visceral layer, right? तो ये पेरिकार्डियम को हम इस तरह डिवाइड करते हैं। अब ऊपर आते हैं एक बार जरा, ये देखो गौर से। सबसे पहले आप लोग देखो ये जो, जिसको मैं ये जिसके नीचे लाइन लगा रहा हूँ, फाइब्रस, फाइब्रस पेरिकार्डियम। देखो जो पेरिकार्डियम है ना उसको हमने पहले दो में डिवाइड किया, ये देखो नीचे हमने उसको डिवाइड किया फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम, ओके, पेरिकार्डियम। तो सबसे जो आउटर लेयर होती है ना, सबसे आउटर लेयर, दैट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक हो गया, ओके। फिर हम आ जाते हैं दूसरी लेयर, कौन सी, सीरस, सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम आगे फिर दो में डिवाइड हो जाती है, कौन कौन सी, पैराइटल लेयर, ठीक है, और कौन सी है, विसरल लेयर। अब गौर से देखो, फाइब्रस पेरिकार्डियम के फौरन बाद क्या है, ये देखो पिंक कलर की, पिंक कलर की क्या है, पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। फाइब्रस के फौरन बाद क्या है, पैराइटल। फिर उस पैराइटल के फौरन बाद क्या है, पैराइटल पेरिकार्डियल कैविटी, जिसके अंदर फ्लूइड होता है, क्या होता है, जिसके अंदर फ्लूइड होता है। फिर उस पेरिकार्डियल कैविटी के बाद जो लेयर है दैट इज विसरल
लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। गौर से सुनो, गौर से। ये जो विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम है ना, इसका दूसरा नाम होता है एपिकार्डियम, जो कि अभी मैंने आप लोगों को ऊपर लिखवाया। ये देखो, इट इज द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट फाउंड बाय द विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? एपिकार्डियम, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैराइटल लेयर, ठीक है, और जो विसरल लेयर है उसके दरमियान होती है पैराइटल कैविटी, जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ठीक हो गया। अब हम नीचे लिखते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी। इट इज द स्पेस, इट इज स्पेस between between two layers of serous, it is space between two layers of serous pericardium, राइट। मतलब कि हमें ये पता लग गया कि जो सीरस लेयर है उसकी जो दो लेयर्स हैं, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर, इन दोनों के दरमियान क्या होता है? पेरिकार्डियल स्पेस। ये देखो, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया, ये जो लेयर है ये, दैट इज विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, और ये जो पिंक कलर वाली है, दैट इज पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। और इनके दरमियान क्या है? ये देखो, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी in which the pericardial fluid is present, in which in which pericardial fluid is present, right? So this is all about the coverings of the heart। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड फिर आगे हम डिजीजेज पढ़ते हैं, जिसमें एंडोकार्डाइटिस होता है, मायोकार्डाइटिस, एपिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं हार्ट के लेयर्स की। सो दिस इज ऑल अबाउट द कवरिंग्स ऑफ द हार्ट।